हेलो एवरीवन हेलो। वेलकम टू पाकिस्तानी बॉयज रिएक्ट। मैं हूं हमजा मैं हूँ अब्बास। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है वो है हाउ डिड बांग्लादेश बिकम अ मुस्लिम कंट्री। बिल्कुल। तो इस वीडियो की जो सजेशन है वो हमारी जो फैन है शेख जहानारा वो कर रही थी काफ़ी टाइम से, बिल्कुल। बट हमारी स्केड्यूल्ड वीडियोस की वजह से हम लोग उस पर रिएक्ट नहीं कर पा रहे। तो आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे और देखेंगे कि बांग्लादेश किस तरह मुस्लिम कंट्री बना। तो जितनी हिस्ट्री मुझे पता है तो लाइक जब पाकिस्तान और इंडिया जब बड़े सग़ीर था और उसमें हाँ बिल्कुल, इश्यूज सब थे, हाँ, कॉन्टिनेंट। और हिंदू मुस्लिम तनाज़ा चल रहा था। तो बिल्कुल। जब सेपरेशन हुई तो जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थी वो पाकिस्तान के पास आ गई हाँ और जो हिंदू मेजॉरिटी एरियाज थी वो इंडिया के पास आ गई। तो बांग्लादेश भी एक ऐसा रीजन था जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी था और उस बिल्कुल। टाइम जो है वो ईस्ट पाकिस्तान बना और हाँ, ऑलमोस्ट लाइक जो वेस्ट पाकिस्तान था उससे ज़्यादा उनकी वो थी तादाद थी। पॉपुलेशन ऑलमोस्ट थी फिफ्टी वहाँ वन पे। परसेंट बिल्कुल। ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन थी वो ईस्ट पाकिस्तान की थी। और फिर जब 1971 में सेपरेशन हुआ तो बांग्लादेश जो है बांग्लादेश बना एंड देन हाँ इट इज़ वो एक मुस्लिम बिल्कुल। कंट्री हाँ, बन गई ये इसी हिस्ट्री तरह। तो हमें पता है, हाँ हमने बिल्कुल, जितना मतलब जितना हम किताबों लोगों ने में पढ़ा पढ़ा है है और बिल्कुल। जितना हमें पता है हिस्ट्री के हाँ बारे में। बिल्कुल तो हिस्ट्री में तो यही कुछ है जितना आपने बताया, लेकिन बिल्कुल। मुझे लग रहा है कि इस वीडियो में शायद कुछ और भी बातें की हाँ गई मुझे है। भी इस तरह लग रहा है हाँ, लाइक क्योंकि ये इसमें हिस्ट्री तो हो भी सबको पता सकता है है। कि सिर्फ ये भी हो। हाँ, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसमें किस तरह की हिस्ट्री की बातें की गई है, हाँ लेकिन बिल्कुल। वैसे अगर हम मुस्लिम हिस्ट्री को स्टडी करें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग काफ़ी इंटरेस्ट हिस्ट्री है। बिल्कुल बिल्कुल। 1400 ईयर्स की बिल्कुल, हाँ, हिस्ट्री। वहाँ से अगर हिस्ट्री शुरू करें और उसमें बिल्कुल। एक एक छोटा छोटा क्लिप भी बना लिया जाए तो हाँ काफ़ी ज़बरदस्त वो वीडियो होगी। तो बिल्कुल। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ बांग्लादेश की हिस्ट्री के बारे हाँ में देखेंगे बिल्कुल, कि बांग्लादेश बांग्लादेश किस जो तरह है बिल्कुल मुस्लिम वो कंट्री मुस्लिम बना। कंट्री बना, और शायद इसमें और सब कॉन्टिनेंट की भी बातें हाँ की गई है, शायद तो कुछ कुछ रिलेटेड कुछ एक्सप्लेनेशन शायद बातें हो, मिल जाए बिल्कुल हाँ इस हवाले से। बिल्कुल। तो चलो गाइस हम लोग वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब बिल्कुल। करें। ये हमारे वीडियो में कहते हैं तो ये आपको भी पता होगा कि अभी ये यही बोलेंगे। तो हाँ, आप सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। तो चलो गाइस देखते हैं हाउ डिड बांग्लादेश बिकम मुस्लिम। तो लेट्स लेट्स गो। गो। बांग्लादेश। One of Bangladesh's main demographic peculiarities, aside from its great population density, is its condition of being sort of a Muslim enclave to the region. While none of its neighbor countries had Islam as their majoritarian religion, around 90% of Bangladeshi are Muslims. In fact, Bangladesh is the country with the fourth largest Muslim population in the फोर्थ world, लार्जेस्ट। almost हाँ, इन द वर्ल्ड। 150 million. At the same time, Islam has been present in Bangladesh as well as in most of South Asia for many centuries as the religion brought by many ruling dynasties and empires. Nonetheless, and except for Pakistan, in no other of these countries has Islam left such a deep mark as in Bangladesh. Why is it then that Islam became Bangladesh's major religion? In answering this question, we shall first inquire how Islam made it to Bangladesh in the पुरानी first हिस्ट्री place. सारी हाँ The first पता signs of चलेगा, Islam इंटरेस्टिंग in है। the Bengal Delta region, where Bangladesh is located, can be traced down to the times of Muhammad himself and the Arab trade routes. Traders were not necessarily missionaries, but indeed helped in putting Islam on the map when going east, even setting their own communities near trade posts in the south of the Delta. But despite traders being the first Muslims to reach Bengal, Islam would only predominate in the region by conquest. Since the beginning of Islam, Muslim conquerors were responsible for a swift expansion process that would lead them from the Middle East to go west to the north of Africa and up to the Iberian Peninsula and Sicily. But despite their conquests in Western and Central Asia, they were unable to successfully penetrate into the Indian subcontinent for many centuries. Reaching Bengal in particular would take Muslim faith 600 years. The Muslim conquest of India began in the 10th century, concretely with the Samanid military commander Alp Tejin. At the surface of the Samanid Empire, which at the time occupied a large part of the Persian region, Alp Tejin was a slave soldier, or Mamluk. Mamluks were common in Muslim warlords' culture, and their army of great importance for Muslim territorial expansion. At the same time,
The fact of being slaves didn't mean that they were limited to a life of service as low-rank individuals. There are multiple examples of Mamluks that achieved power positions in the military and political life. This was the case of Alp Tejin. Of Turkish origin but of Persian and Muslim upbringing, he rebelled against the Samanid and formed a kingdom of his own in Ganza, now Afghanistan, in 1962. Alp Tejin died the next year and was succeeded by his son Sabuk Taijin, who became the founder of the Ghazvanid dynasty. The southern Hindu Shahi dynasty was reluctant of a Muslim kingdom so close to their domains and wasted no time in attacking them. The war between these two kingdoms lasted for years. In this conflict, the Shahi dynasty was able to convince his fellow Hindu warlords of the danger of the Ghazvanids and of forming a confederacy for fighting together against the Muslim threat. Mahmud, Sabuk Taijin's son, defeated this alliance in 1008, expanding their kingdom to Lahore, now Pakistan. But by no means Lahore was the end of his campaign. Southern, he found an even greater picture: how wealthy these Hindu kingdoms were. Mahmud subsequently kept going south, conquering cities and leaving them to be ruled by his Hindu vassals. Nonetheless, the extension of his kingdom did not allow Mahmud to go further. The Ghaznavid dynasty would face its own hard times with the Seljuks Turks coming west. The dynasty would finally perish at the loss of Lahore in 1186. Behind Ghaznavid's defeat was the Ghurid dynasty. The Ghurid had converted from Buddhism to Islam at the beginning of the 12th century. After taking Lahore from them, they moved to northern India against the then ruling Sena dynasty. It would be Ghurid general Muhammad bin Bakhtiyar Khalji who would conquer Bengal in 1204. As the former Alp Tejin, Khalji was a Mamluk of Turkish origin. The story tells that he captured West Bengal Nabadvip, the capital of the Hindu Sena dynasty, only backed up by 18 cavalry soldiers. In 1206, with the assassination of the Ghurid emperor, his territory was divided among his generals. Khalji then established his own Mamluk dynasty and his Delhi Sultanate. In its more than 3 centuries of existence, the Muslim Delhi Sultanate would have 5 different dynasties, firstly Turkish and later Mongol, and would eventually cover a great deal of India's territory. This is when the lasting development of Islam in Bengal began. Before Islam, since ancient history, Buddhism was the main religion in Bengal, as well as Orthodox Hinduism, which was also the religion of the former Sena dynasty. Bengal was not directly affected by the then Buddhist Mongol Empire attack on West Asia, yet it became an escape for refugees of the Mongol imperial horde. These Turkish Muslims often migrated grouping around Sufis, Muslim followers who were seen, if not as spiritual leaders, as heads of their communities. This migration also included scholars from other Muslim locations. As a result, South Asia became an important nucleus of Muslim culture. Bengal, most of all, had this fate. Surrounded by mountain ranges, East Bengal was a sort of geographic halting point for migration movements. Buddhist and Hindu monasteries suffered the most of the growth of Islam faith. Most of its monks and Brahmins had to escape to remote parts of Bengal and even the remotest places like the Nepalese mountains. Bengal started its independence process from the Delhi Sultanate in 1338. By then, the Bengal region was divided into 3 parts, each with its own ruler. The following decades saw the unification of Bengal in the form of the Bengal Sultanate and the siege of its autonomy by the Delhi Sultanate. But Bengal's independence prevailed. Meanwhile, the region gained notoriety for the development of literature and painting, among other liberal arts. But also, the Muslim population began to outgrow the rest of the religious groups. This process had its peak in the 16th century. In 1576, the Sultanate of Bengal succumbed to the Muslim Mughal Empire, which in 1610 founded Dhaka as the provincial capital of the empire. Still,
the Bengali region remained somewhat independent and went under a great social and economic transformation thanks to the agricultural rush. Since before the 15th century, the Bengal rivers started to suffer a great transformation that ended in the main course of the Ganges connecting to the Padma. This meant two things. Firstly, river communication made possible a greater economic exchange with other regions. Secondly, as the Bengali Delta and its rivers' flow increased, agriculture exploitation increased greatly. As a result, rice production was so prolific that for the first time, rice became a major exportation product. This natural phenomenon coincided with the Mughal Empire's conquest of Bengal, and it was during this time that the agrarian base of the population took place. Until then, the region was still covered by a great deal of forest, and developing agriculture was at the hands of Muslim religions, who received, along with land grants, the task of clearing the forests for one part, but also of constructing mosques. These mosques acted as central cultural institutions for the local population, as well as for the increasing number of migrants which, as we said earlier, found the Delta as a halting point in their migration. In this sense, Islam's greatest development in Bengal occurred on par with its economic development, to the extent that the very act of cultivating was and continues to be seen as bearing the transcendence of a religious act. We shall also acknowledge that previously, since the times of the Mamluk Sultanate, Islam in Bengal was mostly a part of urban culture, that is, related to wealthy nobles as well as state members like religious officials, soldiers, and judges who often claimed to be of foreign origin. However, similarly to how Christianity grew in Europe, the development of Islam in Bengal was not a matter of imposing religion to an existing population, but of creating one with it while absorbing the local elements. In this sense, despite Islam's settle in the region as a conqueror's religion, it would finally grow and develop organically in Bangladesh. This was also the case with the massification of paper during the Mughal rule. The implementation of paper as a communication technology meant the move from an oral tradition to the new authority of the written word. Massification of the Quran fuels the regional cultural identity and allowed Islam to be understood not as an alien ideology, but as a part of local culture. By the end of the Mughal Empire rule, Bengal and Afghanistan gathered most of the Muslim population in South Asia. Likewise, with the Indian Independence Act of 1947, the territories of this ex-colony were divided according to the faith of its inhabitants. As such, Pakistan was born as a country that also included the Muslim population on the other side of India, now forming Bangladesh, which finally became independent from Pakistan in 1971. गाइस यहाँ तक थी वीडियो और काफ़ी अच्छी हिस्ट्री बिल्कुल एक्सप्लेन बहुत की थी जबरदस्त काफ़ी एक्सप्लेनेशन उन्होंने हाँ की थी काफ़ी हिस्ट्री की। लंबी भी थी और काफ़ी ज़बरदस्त लाइक उन्होंने अच्छी हिस्ट्री एक्सप्लेन की अच्छी बातें की जिस तरह बिल्कुल उन्होंने कहा कि लाइक वो लाइक पूरी हिस्ट्री बता दी ना ऊपर से जहाँ से वो कह रहे थे कि हज़रत हाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब से थे तो उस टाइम से जो है ये कॉन्क्वेस्ट शुरू हो गया था बिल्कुल और सहाबा जो थे वो जाते थे ट्रेड से और उससे जो है बाकी उसमें जाते थे और इस्लाम की दावत करने जाते थे तो उसकी वजह से वो सारी रीजन में पहले पहुंच बिल्कुल गए और बांग्लादेश की स्पेशल बात ये थी कि वहाँ पे जो है इस तरह मतलब कंकर और हाँ जंगे बिल्कुल वगैरह नहीं हुए बिल्कुल उनमें एक क्रिएटिव माइंड से उसको जो है हाँ वो बिल्कुल किया लाइक हुआ है जंगे तो इस्लाम में लाइक इस तरह लाइक उन्होंने खुद भी कहा कि लाइक यूरोप की तरह जो जहाँ पे क्रिश्चियनिटी इन्फोर्स की गई हाँ थी इस्लाम को लाइक इन्फोर्स नहीं किया गया था बिल्कुल इस्लाम को तो लाइक इस तरह फोर्स किसी पे नहीं किया था कि ज़बरदस्ती आप लोग वो करें और इसी तरह इन लोगों ने लाइक अपने उससे ग्रो वो लोग जो थे अपनी रिलीजन चेंज कर रहे थे और जो इसमें गजनवीज आ गए थे हाँ और फिर उसके महमूद गजनवी जो थे बिल्कुल उनका नाम है बिल्कुल वो लाहौर तक आए थे उसके बाद जो है वो उनका नाम लिया वो क्या थे खिलजी हाँ हाँ खिलजी खिलजी बिल्कुल हाँ उस पे वो मूवी भी एक बनी है खिलजी पे वो बिल्कुल रणवीर सिंह वाली एक मूवी हाँ है बिल्कुल तो खिलजी इस पे आए फिर और खिलजी इन्होंने मतलब जिस तरह ये मुगल सल्तनत हाँ की बात की बिल्कुल तो स्पेशल बात बांग्लादेश के लिए ये थी कि वो ढाका जो था वो उनका एक इकोनॉमिक कैपिटल बन हाँ गया था बिल्कुल लाइक तो वेस्ट वहां से बंगाल का बिल्कुल तो वहां से हाँ सब कुछ वो हो रहा था हाँ तो बिल्कुल ये एक स्टेट स्पेशल कैपिटल बात था है और उनके बांग्लादेश फिर के उन्होंने लिए ये भी कहा कि लाइक जब उनके वो
دریا ہے اس کا وہ چینج ہو رہا تھا ہاں بالکل انوائرمنٹ، تو پھر ان لوگوں نے اس طرح کیا کہ لائک وہاں پہ رائس پروڈکشن انکریز ہو گئی، بالکل اور انہوں نے لائک مغل سلطنت نے وہاں کے جو لوگوں تو ان کو یہ مشن دے دیا کہ آپ جو ہے یہ فارسٹ کو کلیئر کرے، لائک وہاں پہ وہ بالکل کہہ رہے تھے کہ فارسٹ بہت ہاں زیادہ تھے، اینڈ دین وہاں پہ ماسک بنائے، اور پھر جو ہے وہ جہاں پہ فارسٹ تھے اس کو ایگریکلچر لینڈ میں کنورٹ کیا، اور اس کی وجہ سے جو ہے پھر آہستہ آہستہ لائک انہوں نے کہا کہ لائک کب سے لائک 1500 1300 سے یہاں پہ ہاں اسلام آ گیا، تو لائک اٹس آلموسٹ لائک ٹل ناؤ 500 600 سال ہو گئے ہیں، تو بالکل وہی 500 600 سال میں جو ہے پھر وہ فلرش کرتا گیا وہ ریلیجن اور وہ سب کچھ، کیونکہ مغلز بھی یہاں پر تھے تو وہ جو اس کا افیکٹ پڑ رہا تھا یہاں پہ بالکل، تو اس وجہ سے اور وہ جو مائیگرینٹس آئے تھے ان کی وجہ ہاں سے بھی وہ جو ہے وہ ریجن کافی زیادہ لائک بالکل. مسلم اور ہمیں پاپولیٹڈ ہو ایک گیا وہ. کمنٹ میں پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ مغل ٹائم جو اکبر بادشاہ کا دور تھا تو صرف بنگلہ دیش واحد ایک ایسی جگہ تھی، مطلب اسٹیٹ تھا کہ وہاں پہ جو ہے اکبر کی حکومت نہیں تھی، کیونکہ ہاں انہوں نے بالکل، زیادہ تر وہ ہندوازم کی طرف وہ چلے گئے ہاں تھے نا، بالکل، تو اس وجہ سے اپنا بنگلہ ایک دیش وہ نے، ہاں ریلیجن بنا بالکل، دیا تھا انہوں نے بنگلہ بالکل. دیش نے ان سے ایک سپریشن اختیار کی تھی اسی وجہ سے، تو یہ بھی ہاں بنگلہ بالکل، دیش کے لیے ایک بہت ہی زبردست لائک بات انہوں ہے. نے وہ ہاں کی کہ بالکل، ہاں کہ بالکل، وہ جو ہے اپنے مسلم اس پہ بالکل ڈٹے رہے انہوں نے. ہاں بالکل. تو اسی طرح لائک یہ تو پوری ہسٹری تھی، ہمیں بھی کافی زیادہ ہاں ہسٹری کا بالکل، پتہ ہے، بہت اس میں کچھ زبردست جو ہسٹری تھی ایونٹس تھے ان کی. لائک ہمیں اپنے پاکستان تک اسپیسیفک ان کا پتہ، جیسے غزنویز تھے یا ان سب کا ہاں پتہ تھا، لیکن یہ اب بنگلہ دیش کے آسپیکٹ سے بھی ہم لوگوں نے وہ ہسٹری بالکل دیکھ لی، تو وہ بھی کافی انٹرسٹنگ تھی، کافی بالکل، اچھی تھی. بہت زبردست ہاں ہسٹری تو تھی بنگلہ دیش گائز کی یہاں بھی. تک تھی ہماری ویڈیو، اور یہاں تک تھا ہمارا ریئیکشن. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی، ہمارا ریئیکشن اچھا لگا، تو آپ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو بھی آپ ضرور سبسکرائب بالکل، کریں. اگر اس طرح اور ویڈیوز آپ کے ساتھ ہو بنگلہ دیش کی ہسٹری کے حوالے سے، ہاں بالکل جو اکنامک ہسٹری ہو بنگلہ دیش کی، تو وہ آپ بالکل ہمارے ساتھ شیئر کریں، اس پر ہم ضرور ضرور ایڈ ریئیکٹ کریں کریں گے. گے. تو تھینک یو گائز فار واچنگ اینڈ گڈ گڈ بائے. بائے.